हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट सेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जैसे आप लोग पहले देखे हैं, मैं पहले एक पार्ट अपलोड किया हूँ जिसमें मैंने हाफ ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कवर अप किया है। और आज इस वीडियो में मैंने पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कवर अप करके कंप्लीट कर देना है। आप लोगों को फिर से मैं बता दे रहा हूँ, दो चीज़ आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। एक बार आप लोग खुद से इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करना है, खुद से इंस्ट्रूमेंट को रीड करना है। एंड सेकेंड, आप लोग एक बार रीड करने के बाद अगर पूरा कवर अप कर लेंगे, देन आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे अलॉन्ग विद द नोट्स। और ये नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरा फर्स्ट जो पार्ट है उस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे, वहां पे पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, राइट। So let's start with the last session of strategic management, that is understanding of business environment. Now definition is nothing but the business environment is equal to totality of external and internal factors affecting an organization, right? Now what is the nature? Nature is should be dynamic, complex, multifaceted and has a significant impact on organizational success. Opportunities and threats. Environmental shift like new tech, regulations can present both. Similarly, importance for managers. Now must analyze and anticipate changes to build competitive strategies. Second is layers of business environment. Now what do you mean by layers of business? There is macro, like pest analysis is there. P for political, E for economic, S for social, T for technological, E for environmental and L for legal. इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोग अच्छे से इसके ऊपर देख के जाएंगे, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इस लेयर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। दैट इज मैक्रो एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, पेस्ट एनालिसिस आ रहा है, जिसमें पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एनवायरमेंटल, एल फॉर लीगल। Next is industry or sector, like analyze using Potter's five forces. Again, important to assess the industry's attractiveness. Third is competitors and markets. Strategic groups, market segmentations, critical success factors is always there. Now, second is characteristics of business environment. Complex, that is multiple interacting factors. Dynamic, constantly changing. Third, multifaceted is perceived differently by different individuals. Far-reaching impact determines growth, profitability, and survival. Fiscal analysis summary, that is political, this role of government, policies, and stability is there. Economic is growth, interest rates, inflation, currency exchange is there. Social is demographics, culture, and social class. तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है, उसका मैंने जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल में हम लोग देखेंगे इनोवेशंस लाइक एआई, आईओटी और नैनोटेक। एनवायरमेंटल में क्लाइमेट चेंजेस, सस्टेनेबिलिटी इज देयर। लीगल में लॉज ऑन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट और कंपटीशन इज देयर। एक केस है जैसे एआईआर बीएनबी डिसरप्शंस, राइट। दैट इज इनोवेशन इज प्लेटफॉर्म बेस्ड, इट्स प्लेटफॉर्म बेस्ड एसेट लाइट मॉडल डिसरप्टेड ट्रेडिशनल होटल इंडस्ट्री। पेस्टल रिलेवेंस क्या है इसके अंदर, रिलेवेंस है पॉलिटिकल केस में, जैसे कि रेगुलेटरी चैलेंजेस फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट इज देयर। टेक्नोलॉजिकल के केस में प्लेटफॉर्म मॉडल, सीमलेस यूएक्स इज देयर। नेटवर्क इफेक्ट के केस में मोर लिसनिंग यूजर्स, दैट इज स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म है, राइट। तो जिसमें ज्यादा लिसनिंग होगा और यूजर होगा वो स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म बनेगा, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री और सेक्टर। इंडस्ट्री के केस में क्या बात किया गया है ना, कंपनीज ऑफरिंग क्लोजली सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्लोजली सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर कंपनी के पास है। सेक्टर के केस में क्या बोला जा रहा है, क्लस्टर ऑफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक एफएमसीजी सेक्टर इज देयर। पॉटर वैल्यू चेन, प्राइमरी एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक इज देयर। then it's operations, outbound logistics, marketing and sales and services. Support activities के केस में क्या होगा, procurement, tech development, HR management, infrastructure is there, and goal that is add value at each stage to gain competitive advantage, right? Next is Potter's five forces. Threat of new entrants, इसके अंदर क्या बोला कि economic of scale, brand loyalty, switching cost, regulations is there. सिमिलरली इंडस्ट्री लाइब्रेरी के अंदर अफेक्टेड बाय स्ट्रक्चर, डिमांड एंड कॉस्ट। जो मेरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने का मेन है कि मैंने क्या किया, पॉटर फाइव फोर्स को डिस्कस किया विद द रिलेवेंट पॉइंट। सो
threats of new entrant is there. Now what are the benefit of threat of new entrants? इसका केस में क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर इंपैक्ट होगा, ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर इंपैक्ट होगा, स्विचिंग कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट होगा, रेगुलेशन के ऊपर इंपैक्ट होगा. सिमिलरली industry rivalry affected by structure, demand, cost and exit barrier, right? Next, bargaining power of buyers, high when few buyers or low switching cost is there. Bargaining power of suppliers, high when inputs are unique or few substitutes are available. Next is threat of substitutes, strong when many alternatives exist. Complementers added by Andrew Grove, like companies whose product add value to your product. Next is VRIO framework. Now, what do you mean by VRIO framework? V for value, R for rarity, I for immutability, and O for organization. So, does the resource offer the value? That's the question. Similarly, rarity is the resource are rare. Third case में can it be imitated? Similarly, is the farm organized to exploit the resources? Next is SWOT analysis. Again, important. Definition: SWOT is strength, weakness, opportunity, and threat. We all know that. Purpose: summaries, internal and external factors affecting strategic development. Goal: align internal strengths or weaknesses with external opportunities or threat to formulate strategy. Now, what are the steps in SWOT analysis? Set an organizational objectives, identify SWOT, maximize strength and capitalize on opportunities, minimize weaknesses and protect against threat. That is also there. Recommend strategies aligned to business environment. Now, what are the benefits of SWOT analysis? Easy to use, low cost and flexible is there. So that is one is easy to use. तो पहले हम लोग क्या बात करेंगे, easy to use है. उसके बाद लो कॉस्ट है कि नहीं वो देखेंगे, उसके बाद फ्लेक्सिबल है कि नहीं वो देखेंगे. Similarly, encourages group input via workshops and brainstorming. So that is also one of the point. Helps in develop strategic alternatives and clarity issues, right? Similarly, क्या लिमिटेशन होगा इसके अंदर? लिमिटेशन क्या है शॉर्ट के अंदर? Now, many blur lines between threat and opportunity. So there is a blur line. Risk of long and unfocused list is there. Can oversimplifying complex situation? That is the questionable things. So क्या ये oversimplify कर सके complex situation को? Similarly, often used to justify pre-decided strategy, right? Many confuse internal SWOT weak or with external opportunity threat factors are also available. So ये सब चीज को भी हम लोगों को दिमाग में रख के आगे काम करते रहना है. नेक्स्ट इज SWOT versus SWOC. Now, challenges is used as a synonym for threat. Analyzing future industry specific obstacles is vital for success. That is important. एग्जाम्पल इंडियन स्टील अथॉरिटीज स्वॉट. इसमें क्या अगर हम लोग इसके ऊपर अगर डिस्कस करें कि इंडियन स्टील अथॉरिटी सेक्टर के ऊपर क्या स्वॉट अगर एनालिसिस करें तो क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ क्या होगा? मिनरल अबंडेंस, स्किल लेबर एंड मैच्योर बेस इज देयर. वीकनेस क्या होगा? हाई कैपिटल इनपुट कॉस्ट, लो प्रोडक्टिविटी, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर. अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या होने वाला है? इंफ्रा डिमांड, रूरल ग्रोथ इज देयर, लो पर कैपिटल कंजम्पशन इज देयर. Threat: Chinese export substitutes, aluminum, plastic is there, tech obsolescence is there. Portfolio analysis and BCG metrics. Definition क्या होगा? Analysis is the firm's product and business unit portfolio to optimize return. Role: treats business unit as investments to be managed. Popular tools के अंदर क्या आएगा? BCG metrics, GE business screen is also available. Next is objectives. Evaluate current business mix. Strategize the additions or disinvestment. Allocate resources. So the ये भी इसके अंदर आ जा रहा है. Advantages के अंदर encourage business level evaluations, support data driven decision making, useful communication tool. That is also part. Limitation क्या होगा इसके अंदर? Vague definition of growth or share. That can be a limitation. Ignore interdependence among units. That can be also a limitation. Rely on subjective assumption. तो ये भी लिमिटेशन के अंदर कवर अप होगा. सिमिलरली बीसीजी मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिस्कस करें तो बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जो हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें स्टार होगा कौन? हाई ग्रोथ एंड
हाई शेयर होगा तो इन्वेस्ट हेविली होगा, स्टार। कैश काउ के केस में क्या होगा, लो ग्रोथ, हाई शेयर, फंड अदर यूनिट्स। क्वेश्चन मार्क के केस में हाई ग्रोथ है बट लो शेयर है, दैट इज अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट सिलेक्टिवली। एंड डॉग के केस में लो ग्रोथ लो शेयर है, डाइवेस्ट और रीस्ट्रक्चर। ये अगर आप लोग एक बार बुक देखेंगे ना तो उसमें एक ऐसा बॉक्स बना के ये डिस्कस किया गया है। क्योंकि मेरा ये नोट समराइज हुए है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो स्टार परफॉर्मेंस कहाँ पे होगा, डॉग कहाँ पे होगा, जैसे ये स्टार हो जाएगा, ये स्टार परफॉर्मेंस हो जाएगा, राइट। तो वो अब एक बार बॉक्स अगर आप लोग देखेंगे इंस्टीट्यूट के मैट भी है बुक में पूरा अच्छे से डिटेल में, तो आप लोग इसको आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको यहाँ पे फॉलो कर लेना। जैसे ये स्टार हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, स्टार के बाद कैश काउ कौन सा आएगा, वो एक बार देखना होगा आप लोगों को। तो एक बार आप लोग एक बॉक्स को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से और समझ में आएगा। क्योंकि ये रिवीजन वीडियोस है, रिवीजन लेक्चर्स है, रिवीजन नोट्स है, तो इसलिए मैंने डिटेल उतना यहाँ पे नहीं डाला है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक। ये मेरा इसका पर्पस यही है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से मैं आप लोगों के साथ रिपीट कर दे रहा हूँ। माई पर्पस इज टू give you an overall glimpse of the subjects, give you an overall आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट्स कि कौन सा टॉपिक कवर अप है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, कौन सा टॉपिक आप लोग अच्छे से करके भी जाना चाहिए बिफोर एग्जाम्स, सो दैट आप लोग उसकी सबसे प्रिपरेशन कर सके। और अगर किसी का पढ़ाई हो चुका है तो वो एक बार फटाफट इसके साथ ग्रो थ्रू कर लेगा, उसको ये पॉइंट्स दिमाग में सुनने से ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने रीड किया, ये तो मैंने रीड किया। तो माई पर्पस इसकी, हाँ अगर कोई अच्छे से पढ़ के आया है तो उसको एक बार सुनने से क्या होगा, रिकॉल होने में ईजी होगा, एग्जाम के पहले बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें डेफिनेशन ऑफ मिशन एंड गोल के ऊपर डिस्कस किया गया है। जैसे मिशन, विजन एंड वैल्यूज और गोल्स के ऊपर डिस्कस किया गया है। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर इंडस्ट्री, कंट्री, मैक्रो फैक्टर को डिस्कस किया गया है। इंटरनल एनालिसिस के अंदर क्या डिस्कस किया है, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को डिस्कस किया गया है। सिलेक्ट स्ट्रेटेजी के अंदर अलाइन स्ट्रेंथ विथ अपॉर्चुनिटीज लाइक मिटिगेट वीकनेस और थ्रेट। इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी के अंदर रीस्ट्रक्चर, रीएलोकेट, रीडिजाइन प्रोडक्ट, प्राइसिंग के ऊपर बात किया गया है। फीडबैक लूप के अंदर क्या बात किया जा रहा है, मॉनिटर रिजल्ट लाइक रिफाइन स्ट्रेटजी कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग, प्लान फॉर मल्टीपल व्हाट इफ फ्यूचर्स एनालिसिस। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग लाइक इंक्लूड मिड लेवल एंड फंक्शनल मैनेजर्स। Alternative generation tools like brainstorming is there, special meeting is there, external consultant is there। हाइब्रिड के केस में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, राइट। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के अंदर क्या बात डिस्कस किया गया ना, इसका डेफिनेशन है फैक्टर वेयर फर्म्स मस्ट एक्सेल टू सक्सीड, राइट। सोर्सेस क्या होगा, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज देयर, competitive position is there, environment like deregulation is there, temporal factors like CEO change is there। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बेस और बायसनेस, इसका बात क्या डिस्कस किया गया है, बाउंडेड रैशनैलिटी, लिमिटेड बाय कॉग्निशन एंड इंफॉर्मेशन लाइक कॉमन बायसेस, प्रायर हाइपोथेसिस बायस लाइक इग्नोरिंग न्यू एविडेंस, एस्केलेटिंग कमिटमेंट, ओवर कमिटिंग टू अ फेलिंग प्रोजेक्ट, एनालॉजी बायस, इनवैलिड कंपैरिजंस, representativeness, over generalizing from small samples, illusion of control, over sentimentalizing control over events, right। तो ये सब इसके अंदर कवर अप हो रहा है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट के लिए क्या बोला जा रहा है, इंप्रूवमेंट टेक्निक के अंदर डेविल्स एडवोकेसी लाइक क्रिटिकली टेस्ट assumptions इज कवर अप देयर, डायलेक्टिक इंक्वायरी, डिबेट opposing plans, thesis versus antithesis, outside view like use historical analogs for realistic assessment, राइट। ग्रुप थिंक के अंदर क्या वही डिस्कस होगा कंसेप्ट का पर ग्रुप अनक्रिटिकली फॉलो डोमिनेंट वॉइसेस और डिसीजंस। रिस्क के अंदर क्या होगा, लाइक फिल्टर आउट ऑपोजिंग डेटा, इमोशनल कमिटमेंट ओवर लॉजिक, रिजल्ट लाइक पोर और अनचैलेंज डिसीजंस। Now, strategic capability. Now, possession of resources, including human, does not guarantee strategic success. Similarly, strategic capability is about how resources are deployed, managed, and integrated into core competencies to drive business performance. Functional strategy के अंदर क्या डिस्कस किया गया है, production strategy that involve capacity, location, automation, vertical integration, layout, etc। तो इसके साथ आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने वन बाय वन चीजों को
जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो कवर अप होना चाहिए, उसको मैंने अच्छे से समराइज करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब लोगों को क्या करना है, एक दो बार बुक को रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, देन इस वीडियो को देखना है, बहुत हेल्प होगा, आप लोगों का फटाफट सब कुछ याद होते जाएगा। नेक्स्ट इज decisions have long-term impact on operations and strategic implementations. Shift from mass production to continuous improvement models, that is also there. Focus on flexibility is more than efficiency as product matures. Sustainability challenges like resources scarcity like oil, water, regulatory pressures for green tech. Example, Club Mahindra's Gist, like customized service design for young metropolitans. ठीक, यंग मेट्रोपॉलिटन्स के केस में वो आज सप्लाई चेन के केस में क्या डिस्कस करना है, एसएम्स फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर प्रोडक्शन एंड यूजर्स, राइट, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन्स, दैट इज एम्फासाइज ऑन जिट, दैट इज जस्ट इन टाइम। इसको आप लोग डिटेल में फाइनल में एक चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आप लोग जब फाइनल में एंट्री लेंगे ना, तो जिट के ऊपर एक टॉपिक है जो आप लोग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर में पढ़ने वाले हैं। टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इम्प्रूव टर्नओवर, ACM can improve profitability by lowering logistics and material cost 50 to 70% of revenue. Risk of JIT, that is no buffer stock is there, vulnerability to disruption is there. Solution, multiple suppliers, contingency planning. Now examples क्या है इसके अंदर है, Walmart's efficiencies through fast replenishment system. तो through fast replenishment system के थ्रू यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, Walmart efficiency के ऊपर बात किया जा रहा है, right? Next, marketing strategy focuses on segmentation, pricing, product design, distribution, loyalty is there. Aggressive promotions help move down the experience curve, like lower cost per unit. Customer loyalty reduces churn, like lower acquisition cost, boost long-term profit. Use of information system to track defections and improve detentions. Human resource strategy like productivity impact cost, quality, innovation and ROIC, return on capital employed. की एलिमेंट क्या होगा इसके अंदर, हायरिंग स्ट्रेटेजी लाइक कल्चरल फिट, एटीट्यूड, टीम वर्क, ट्रेनिंग, एनहांस स्किल, एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ मैनेजिंग टीम्स लाइक इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूस सुपरविजन, इंक्रीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, pay for performance like group based incentives for foster cooperations. HR system must align with strategy. Managers play a critical role in such cases. Focus on both hard, that is recruitment, rewards, and soft like culture, behavior aspect. So hard और soft दोनों कल्चर के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से समझेंगे और रीड भी करेंगे बुक से। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर for strategy implementation, like functional structure based on core department like HR हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सिंपल होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए, एफिशिएंट फॉर स्मॉलर फर्म्स होना चाहिए। लिमिटेशंस क्या होगा, साइलो मेंटालिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, टॉप हेवी डिसीजन मेकिंग इज देयर। Causes, Electrolux shifted from geography based to functional structure for simplicity and synergy. Multi-divisional structure like M form, divisions by product or geographies or services, encourages autonomy, specialization, strategic control. Risk of duplication is there, isolation and short termism. Matrix structure के केस में combines two dimensions like product and geography. Enhance cross functional collaboration but may create conflict, confusion and delay. Transitional Transactional structure balances global coordination with local representativeness, encourage center of excellence, knowledge sharing. Example, Unilever's global innovation hubs. Project-based structure like teams formed and dissolved as per project. High flexibility suited for event-based or time-limited activities like consulting हो गया, construction हो गया, right? Drawbacks क्या है इसका, नॉलेज ऑफ रिटेंशन एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का अगर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, तो इसमें क्या बात बोला जा रहा है, इट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट्स, राइट, इट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट्स with distinct marketers, help tailored strategies at a business level. Too many SBUs is create complexity, so इसलिए मैंने वो लिखा है। आइडेंटिटी वाया क्या, identity via market based criteria and capability based criteria. Now what do you mean by market based, that is a customer segment, channel,
And what do you mean by capability based? That is skills, technologies. Next is BPR, business process reengineering. That is a fundamental redesign of processes for dramatic gain in cost, speed, quality, developed by Hammer and Champy. तो ये ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है फोकस क्या है इसका मेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग अच्छे से पढ़ के भी जाएंगे. फोकस ऑन क्या? कंबाइनिंग टास्क, empowering workers, natural process flow, reducing control points, right? Shared databases. Like cases IBM create credit, reduced processing time from 6 days to 4 hours. See the effect of I, that is BPR, business process reengineering. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. बहुत सारा कंट्रोल के हम लोग डिस्कस करने वाले छोटा छोटा करके टाइप्स के अंदर. प्रीमाइज कंट्रोल लाइक वैलिडेट assumptions, एग्जांपल इन्फ्लेशन, competitors. Second is strategic surveillance, general vigilance. Third is special alert control, respond to unexpected events like crisis. Fourth is implementation control, like monitor key milestones and strategic thrust. Control mechanism. Now, what do you mean by control mechanism? Like personal control is their direct supervision जहाँ पे हम लोग करते हैं, और peer oversight. Output control में performance target हो सकता है, often linked to incentives, must be realistic, avoid goal distortion. Behavioral control हो सकता है, behavior control like rules, SOPs, standardized procedures is there. Budgets and audit mechanism is also part of that. Operational control, focus on short-term efficiency. Long steps is set standards. Next is measures. Next is identify deviations. Next is take corrective actions. Tools क्या होगा इसके अंदर? वेरिएंस चार्ट, पार्ट CPM और KPIs. गोल कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या आने वाला है? अलाइन इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. टूल्स क्या होगा इसके अंदर ना? परफॉर्मेंस लिंक्ड पेज, स्टॉक ऑप्शंस, कम्युनिकेशन, डायरेक्शन, मोटिवेशन, रूटेड इन एजेंसी थ्योरी, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर क्या कवर अप होगा इसके अंदर? की आर ए जैसे की रिजल्ट एरियाज लाइक डिफाइन मेजर जॉब ऑब्जेक्टिव्स. KPI like key performance areas like broad functional responsibilities. Third is KPI like key performance indicators like measurable outcomes tied to goals. Now is approaches क्या होगा इसके अंदर? Approaches to strategic control, traditional approach and contemporary approach. मैंने दोनों अलग अलग करके डिस्कस किया है. तो ट्रेडिशनल के अंदर सीक्वेंशियल फीडबैक बेस्ड होगा, इसमें डायनामिक होगा एंड कंटिन्यूअस होगा. इसमें रिएक्टिव हो सकता है, इसमें प्रोएक्टिव होगा. बेस्ड ऑन फिक्स्ड गोल होता है ट्रेडिशनल में, यहाँ पे बेस्ड ऑन इवॉल्विंग एजम्पशन होता है, राइट. नेक्स्ट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रिवोल्यूशन. Now, digital tech refers to tool using binary data like zeros, ones, like mobiles, games, social media. The digital revolution began post 1947. अच्छा, यहाँ तक एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, राइट. तो आप लोग यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है जो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रिवोल्यूशन का, इसको आप लोग मेरे साथ 2-3 बार अगर ये वाला वीडियो देखेंगे और रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और दिमाग में भी रहेगा. इट्स अ मोर ऑफ अ आई वुड से इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक. तो जितना इंफॉर्मेशन है बस उसको आप लोगों को याद करने का कोशिश नहीं करना है, बस सुनते जाना है 2-3 बार, तो आप लोगों के लिए हेल्प होगा, ऑटोमेटिक ये याद भी हो जाएगा. So digital revolution began post 1947. Transistor invention is there, right? Transforming communication, record keeping, and job creation using information age. Ongoing disruption across sectors like robot in manufacturing, personalized medicine, and AI lead innovation. Next is digital strategy versus transformation. Digital strategies take focused plan for value creation, short-term actionable goals. Digital transformation is organization-wide change in CX processes and models in integrating tech for competitive advantage. Like strategy set direction, transformation executes it. Next is key data, key DT questions. क्या क्या हो सकता है डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर? आर यू इन द राइट बिजनेस? इज योर वैल्यू डिलीवरी डिजिटली एनहांस्ड? आर यू टारगेटिंग द राइट कस्टमर? एंड इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन रिलेवेंट? नेक्स्ट इज आर योर कैपेबिलिटीज कॉम्पिटिटिव? नाउ कोर एलिमेंट क्या होगा इसके अंदर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का? डिस्कवर, डिजाइन, डिलीवर, डी रिस्क,
राइट। तो डिस्कवर होगा, डिजाइन होगा, डिलीवर होगा, डिस्क होगा। दैट इन्वॉल्व पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स फोकस ऑन एजिलिटी, स्टेक होल्डर एक्सपीरियंस, अपस्किलिंग एंड कल्चरल चेंज। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होगा, एंड डिजिटल इनोवेटर्स के केस में, बिग डेटा के केस में, मैसिव, फास्ट, डाइवर्स डेटा सेट्स, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इज देयर। फीचर्स के केस में वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी एंड वेरिएबिलिटी। बेनिफिट्स क्या होगा, बेटर डिसीजंस एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज देयर। नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जैसे कि हम लोग क्लाउड जो यूज करते हैं, अभी सभी को पता ही, AWS, अमेजन वेब सर्विस इज देयर, गूगल डॉक इज देयर। बेनिफिट क्या है इसका, कॉस्ट सेविंग है, मोबिलिटी है। चैलेंजेस, सिक्योरिटी, वेंडर लॉक, कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज AI and ML, enable automation, smart decisions, customization is there. Alibaba and Adobe are successful case examples. नेक्स्ट इज जैसे कि AI हो गया, IoT हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इज इक्वल टू एडवांस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लॉकचेन के अंदर क्या आएगा, इम्यूटेबल शेयर्ड लेजर फॉर ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन। एप्लीकेशंस लाइक फाइनेंस, टेलीकॉम, स्पैम ट्रैकिंग, एग्रीकल्चर के केस में टी क्वालिटी एंड एडवर्टाइजिंग। फीचर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के केस में, बोट्स मिमिक ह्यूमन एक्शंस फॉर रिपीटेटिव टास्क, राइट। तो दैट इज मिनिमाइज ह्यूमन एक्शंस फॉर रिपीटेटिव टास्क। बेनिफिट क्या है, कॉस्ट सेविंग है, स्पीड है, एक्यूरेसी एंड स्केलेबिलिटी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, जैसे हम लोग पता ही है, डिवाइसेस, सेंसर्स कम्युनिकेट वाया इंटरनेट, लाइक यूजिंग स्मार्ट लाइटिंग, पार्किंग, मेडिकल, फ्रिजेस एटसेट्रा। enable efficiency, data driven insights, automation। डिजिटल स्ट्रैटेजी एसेंशियल के केस में लीडरशिप आएगा, जिसमें चूज अ विजनरी डिजिटल लीडर आएगा। अटैक वर्सेस डिफेंड के केस में अलायंस स्ट्रेटेजी विद थ्रेट अपॉर्चुनिटीज। मेजर्ड अप्रोच के केस में अवॉइड हेस्टी मिस अलाइन टेक इन्वेस्टमेंट्स। फ्यूचर प्रूफिंग के केस में एनेबल कंटिन्यूअस री इन्वेंशन। केस स्टडीज लाइक, क्या केस स्टडीज के अंदर डिस्कस किया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, लाइक डिजिटल पेओएल सक्सेस, Adobe shift to creative cloud to reduce piracy. Alibaba is AI-enabled smart logistics and services. Razor Pay, like integrated fintech for seamless payment, is there. शिक्षा, फाइनेंस, लेंडिंग सॉल्यूशन फॉर एजुकेशन। ये सब की स्टडीज आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट के मैथ से गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों का कवर अप हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज इमर्जिंग टूल और ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, पेड और ऑर्गेनिक कैंपेन हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर एंड ईमेल मार्केटिंग इज ऑल्सो देयर, दैट इज पर्सनलाइज आउट रीच हो गया। कंटेंट मार्केटिंग हो गया, एडुकेट एट ऑल बायर स्टेजेस। SEO and PPC, like visibility through search engines, and affiliate and mobile marketing in performance based and mobile fast engagement। तो देख रहे हैं आप, इसी के साथ आप लोगों का ये टॉपिक भी कवर अप हो रहा है, और पूरा SMN का मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, पूरा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। आप लोग अगर ये वीडियो दोनों देखेंगे, आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन भी कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा होगा टॉपिक तो डू शेयर विथ योर फेलो मेंबर्स, फेलो स्टूडेंट्स, अगर पीयर ग्रुप में आप लोग शेयर कर सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे ही 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज रिवीजन सीरीज लाने वाला हूँ, और आप लोगों को बस इस चैनल को फॉलो करना है। ओके, जस्ट फॉलो दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। बस आप लोगों को ये 2-3 बार अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करना है, एंड आई होप इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोगों को एग्जाम के पहले जो क्विक रिवीजन के लिए जो जरूरी होता है वो आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, 1 बार 2 बार पढ़ने से, देखने से। और ये नोट भी मेरा यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है पहला वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ पेशेंस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप मैंने ट्राई किया है कि 21 पेजेस में आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा 21 पेजेस में इसको कवर अप किया है। तो पूरा 21 पेजेस में हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक छूट गया हो, तो बट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसी को रखा है। आप लोगों को बस इंस्टीट्यूट मैथ को 2-3 बार रीड करना है, देन प्लीज कम टू दिस वीडियोस एंड कंप्लीट दिस 2 वीडियोस। आई होप इट विल हेल्प यू एंड इट विल गिव यू एन एज कि हाँ ठीक है, एक बार मेरा पढ़ाई हो चुका है, फिर से एक बार मैं रिवीजन वीडियो देखूंगा तो मेरा फटाफट रिकॉल हो जाएगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। आप लोग अगर डायरेक्ट अगर इस वीडियो में जंप करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, आई एग्री दैट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, मैंने फटाफट आप लोगों के साथ
डिस्कस कर नहीं किया है डिटेल में, मैंने फटाफट रीड किया है सो दैट आप लोगों को एक बार फटाफट रिकॉल हो जाए चीज़ें, राइट। तो इसी के साथ मैं आपका आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड डू कमेंट योर सजेशंस, अगर कुछ सजेशन भी है, कुछ अगर आप लोगों को चाहिए कि एक्स्ट्रा ये सब्जेक्ट के ऊपर भी ऐसा रिवीजन सीरीज आना चाहिए, तो डू कमेंट इन माय वीडियोस एज वेल सो दैट मुझे आइडिया हो, एंड मैं अकॉर्डिंगली वैसा ही आने वाले टाइम में भी वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।